साइंसेस के मैनेजमेंट से बात कर लेती हूँ। दरअसल कंपनी ने इन्हीं के सब्सिडरी के जरिए कोंडापुर हेल्थ केयर में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। अब कोंडापुर हॉस्पिटल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। कंपनी की आगे की ग्रोथ प्लान्स क्या है, हमारे साथ है कंपनी के CMD डॉक्टर भी भास्कर राव। डॉक्टर राव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर आप थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड समझा सके, ये जो हिस्सेदारी आपने बढ़ाई है, कोई खास वजह थी इसे बढ़ाने के पीछे? So the entire thing, what we have a subsidiary of KIMS Kondapur, and that is almost running around 75-80% occupancy. Now, just opposite to that, few of the doctors and other people, they acquired land and they are building for a hospital. So then we thought it is good for us so that we can also participate with them, and later on we will be able to take over the entire thing from our side over a period of time. That is the concept behind this. Okay. Oh, so and how, as in how long would it take for you to take the decision to perhaps take over that particular hospital? You definitely see metal in it? No, what we are doing is, first they are planning to build as a hospital. Once we are start investing in that, it will take another couple of years to finish the entire infrastructure and then doing all those things and getting the occupancy certificate. After that, we can able to see whether we will able to take it on a lease, rental premises, or we will have the financial things we can able to see. At that time, we will take a decision whether it needs to be continue as a rental premises like what we are doing in Kondapur, or maybe if we can able to get a proper price, we can able to take it on a buyout or maybe merge in the Kondapur healthcare. That time we will take a decision. So roughly how much have you invested in this particular entity, sir? Yes, we have invested a couple of days back. Nearly we acquired about 13.24% of the stake. Okay. Will you be able to tell us as to how much did you pay for that 13% stake? 30 crores. 30 crores. I get that point, sir. So obviously there is an opportunity that you may either rent it out or perhaps acquire it in the future as you deem fit. Now that we are speaking to you, Dr. Rao, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस समय आपके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे टच बेस किया था Q1 के नंबर्स के बाद, your occupancy was at 70%. Has it improved or does it stand at 70% at this point in time? At the moment, it is increased. It is 75 to 77% occupancy is there. There is not much of scope, and we will try to add few more beds. And that is the reason we are looking out this opposite building that is coming up, so that tomorrow, it will next 4 to 5 years, there will not be any. We cannot be able to provide any growth in the existing facility, and that will going to accommodate nearly 600 to 700 beds. So in these 600 to 700 beds, then as of now, we have 250 beds with a 75-80%, and moving forward in the next 10 years. And we are definitely keep growing up in that. That's why we are anticipating and taking up this facility. Okay, that's investing in that. That's interesting to hear, sir. आपने कहा 75 से 77%, 75 to 77% आपकी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी है। एवरेज रेवेन्यू क्या है पर बेड इस समय? It is the revenue per bed offline. I think it will be around 40. The last revenue. So the last number that you had shared with us in Q1 was roughly around 31,700. So has it moved on from there? Because no, it is keep moving up, not be very exorbitantly. Maybe 32, 33 is the thing right now. 32, 33. And have you identified any more units like the one that you were mentioning to scale the business going forward? क्या ऐसी कुछ और acquisitions आपकी तरफ से होंगे? No, actually, we were mentioning about in all these Andhra hospitals, nearly 6 hospitals, they are also in the same phase of 75, 78%. There is not much of a scope. We are identified some lands near in the same existing place. Maybe in the next 2 to 3 years, we are planning to build another 12 to 1500 beds in those Andhra facilities.
Do you have funds for that, or will you have to raise funds, Dr. Rao? We have funds, You internal accruals mostly. ओके डॉक्टर राव, प्लेजर स्पीकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम Thank you. श्योर आपके लिए एक बिजी दिन है, आपसे इजाजत लेंगे. लेकिन बहुत ही दिलचस्प चीज उन्होंने कही कि अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नियरली फुल होती हुई दिखाई दे रही, इसीलिए उन्होंने एक और हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किया है जिसमें काम शुरू हो चुका है, और वहां पर दरअसल कंपनी धीरे धीरे करके निवेश कर रही है कि जब जरूरत पड़े अगले 1.5-2 साल में वहां पर भी या तो उसे एक्वायर करेंगे या फिर उसे रेंट आउट करेंगे. और वो दरअसल एक ज्यादा इजी मॉडल रहेगा कंपनी को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. और रफली उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इजाफा जरूर देखने को मिला एवरेज रेवेन्यू अर्न्ड पर बेड में. स्टॉक आपके सामने हल्की सी बढ़त दिखा रहा है आज 2147. 3 महीने में 33% के रिटर्न इसने कमाए हैं. स्वाति, एक टेक चेक दे पाएंगी क्या कृष्णा मेडिकल पे? ओवरऑल देखो सेटअप तो स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम नजर आया है. अभी फिलहाल तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 2080 का एक क्लस्टर सपोर्ट लेवल से, तो जब तक वो होल्ड है तब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगी. मुझे लगता है कि 2230 2240 तक जाने की संभावना है, तो ये होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर. एक परफॉर्मर रहा है, देखिए पिछले 6 महीनों में यहाँ पर 53% तक के गेन्स और 2230 तक के लेवल्स भी आगे देख सकते हैं. अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिए, इस तरह के मार्केट में स्टॉप लॉसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी नोट कीजिएगा जैसे जैसे आप ट्रेड लेते हैं. चले लेंगे एक छोटा